Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you so much for joining, inshallah. Let's begin our session today. Um, we were in the last class going through some important characteristics of a moment, right? And we were looking at basically our big enemy, Shaitan, who's Ufudul Mubin, Aduvul Mubin, our most shadid enemy. And what are the things that the conversations about him and Allah, or anything where Allah subhanahu wa ta'ala has told us something about him, right? And how he tries to make us transgress or go astray from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and how he basically um, what he does, right? What has he pledged Allah, or how has he um, made people go astray? So there are quite a lot of things and lessons in the Quran for us for that. And obviously, एक मोमेन अंडरस्टैंड करेगा उन चीज़ों को एंड ऑटोमेटिकली अपना माइंडसेट ऐसा बनाएगा कि वो प्रॉब्लम्स और वो चीज़ें जो शैतान की आदत है, मतलब उसकी साइकोलॉजी है कि वो इस तरीके से अटैक करता है, वो किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारे अंदर डेवलप करता है to make us amongst the people who are the transgressors, who are the people of hellfire or who are his followers. वो हम जब study करेंगे and then we're going to understand how to change our mindset, तो फिर inshallah we will not be amongst his followers. The thing that we studied in the last class was shukr, right? So we understood shukr mindset and how nashukri is something that he promised that he's going to make us nashukra, right? So we basically looked at different ahadith and we looked at the psychology behind it. Today we're going to take forward and we're going to focus on Surah Araf, and we're going to look at the next set of ayahs, and we're going to extrapolate from it कि हमें क्या learning है. The one that we're going to be focusing on today is deception, the ideas of illusion. Okay? How shaitan deceives us about the dunya. Okay? So let's have a look at the ayahs first. I'm not going to read because it's 7 ayahs, so I'm not going to read the Arabic. I'm just going to focus on the translated bits. So it starts from Allah subhanahu wa ta'ala telling Hazrat Adam and his wife to live in the paradise, okay? Eat from wherever you like, okay? But do not go near this tree. So Allah subhanahu wa ta'ala created a boundary that this is the boundary, इसको cross नहीं करना है. अगर आप करेंगे तो ये भी बता दिया कि फिर you are going to be fatakuna minal zalimin. So you're going to become from amongst the ones who did zulm, who did transgression, okay? Or who did wrong. Now what did Satan do? فَوَسْوَسَ لَهُمَا شَيْطَانُ. So he gave them this waswasa. He tempted them. Okay? He whispered to them. And the desire that he had was to expose what was hidden of their nakedness. Okay? So his desire was to make them naked. Okay? And we will understand this. वैसे ही पहले ही हमने हया के बारे में पढ़ा है, and how important haya is in Islam. And it is a part of our faith. Okay? And the Prophet said, if you don't have haya, then do whatever you want. And we did understand कि वो haya में moral shame भी आ जाती है. Shame and embarrassment from standing in front of Allah after disobeying His commands. Okay? But obviously, it also includes modesty in terms of your bearing. But यहाँ पे it can also be obviously both types of nakedness. The nakedness of moral nakedness, where you disobey the command of Allah, which Allah subhanahu wa ta'ala had already given them, and also to make them physically naked as well, right? This is what he wanted, and what he did was he tempted them. How did he tempt them? Your Lord has forbidden this tree to you only to prevent you from becoming angels or immortals. What did he say? That illa an takuna malakini aw takuna min al khalidini. So either इसी वजह से उन्होंने मना किया. So he gave them an illusion that the reason why your Lord stopped you is ताकि ये ना हो जाए कि आप हमेशा के लिए यहाँ रहना लगे या आप जो है वो मलाइका बन जाए. So you can understand whatever you want to from the idea of what forever dwelling in the Jannah would mean, or what
becoming malaika would mean. But this is what he did. He basically deceived. His desire was to make them naked, to make them disobey the command of Allah. And the way he did it was to give them illusion of power, illusion of immortal, immortality. That आप forever के लिए यहाँ पे रहेंगे and you will be powerful like the malaika, right? So that is what the illusion that he gave them. And he आगे से also said that I am truly your sincere advisor, like sincere या well wisher. वो इंसान होता है जिसकी आप एडवाइस लेते हैं, जो आपको वो गाइड करता है, आप उसको फॉलो करते हैं. सो ही बेसिकली प्रिटेंड्स टू बी आवर सिंसियर एडवाइजर, कि वो हमें सही तरफ गाइड कर रहा है, राइट? एंड दैट बट एक्चुअली इज गाइडिंग अस टूवर्ड्स थिंग्स दैट आर actually transgressions, Allah subhanahu wa ta'ala ki disobedience, and we see them as power, we see them as forever living for whatever reason, like extra time or forever, okay? Or we see that as power, and whatever symbols you want to associate, because I don't want to get into tafsir, whatever symbols you want to associate with malaika and with khalidin, as in forever, living there forever, आप उसके associate कर सकते हैं to understand the kind of things shaitan deceives us with. आगे बहुत interesting है, because then Allah subhanahu wa ta'ala makes it even clearer. So he brought about their fall through deception, right? So فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, that through deception उन्होंने उनको हलाक कर दिया. So they were both cast down because they were deceived. So this was a failure in the terms that they got deceived, and this is the deception of shaitan, that his maqsad is to make you disobey, transgress Allah subhanahu wa ta'ala's hudud and go beyond it, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala then reminded again कि मैंने बताया नहीं था that you're forbidden. Like he reminded the boundary that he had created. And then he again said that और मैंने ये नहीं बताया था that shaitan is uduvun mubin, that you're declared enemy, right? So then they did tawbah, ठीक है? And then Allah subhanahu wa ta'ala sent them down. And इसमें भी Allah ta'ala ने ये कहा कि mata'un ila heen, that you will get your mata, your providence, for your appointed stay. Okay, so this actually goes for all of us. Okay, we will get whatever provision is destined for us for the time we are in this world. Okay, and then Allah subhanahu wa ta'ala added, you will live there and you will die and you will be resurrected. Here is important because this then talks about further that Allah ta'ala ne phir bless kya kiya. Then he says that we provided you for clothing to cover your nakedness, but the best clothing is righteousness. This is one of Allah's bounty, so perhaps you will be mindful, right? So I'm just gonna وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Right? So this now I make the connections. The story goes that Shaitan, he promised Allah subhanahu wa ta'ala that I am going to attack from all sides ताकि ये ना शुक्र हो जाए, ठीक है? सेकंड, मैंने आपको कनेक्शन क्रिएट किया था पिछली क्लास में दैट नाशुक्रे लोग देन अल्लाह ताला की बाउंड्रीज भी ब्रेक करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स दिख ही नहीं रही होती हैं. जब उन्हें ब्लेसिंग्स नहीं दिखती हैं तो उन्हें बुराइयां दिखती हैं, और जब उन्हें बुराइयां दिखती हैं तो एक भी उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है जो उनको चाहिए होती है चीज, तो फिर वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुदूद कायम की थी, ठीक है? सो यू बेसिकली नाशुक्री लीड्स टू डिसोबीडियंस. So the first thing that we see is that he then tries to make Hazrat Adam and his wife disobey Allah subhanahu wa ta'ala's command by deceiving them. How does he deceive them? By giving them false promises. False promises of what Allah actually wants. ठीक है? He tries to tell them that ये नहीं है, असल में अल्लाह ताला ने मना इसलिए किया है क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहते हैं, या अल्लाह ताला ये नहीं चाहते, right? So telling them what Allah actually wants, ठीक है? And deceiving them with power and with forever, with ultimate life in paradise, basically, and power. That is what he deceives them with, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala, then their important thing of what happens after that deception. What happens is that moral shame and that bodily shame that happens. And then Allah subhanahu wa ta'ala, despite them disobeying, Allah ta'ala reminds them कि मैंने बताया नहीं था कि तुम्हारा
दुबुन मुबीन है ये, राइट? ये स्टोरी नरेटेड ही है टू टेल यू दैट हाउ शैतान डिसीव्स अस एंड हाउ ही इज आवर बिगेस्ट एनिमी. सो वी शुड नॉट फॉलो हिम एंड वी शुड फॉलो ओनली द कमांड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Then Allah Ta'ala basically tells them, and then they basically ask for forgiveness, जो कि कलिमात भी अल्लाह ने उन्हें सिखाए. वो फिर माफी मांगते हैं. तो तौबा तौबा हमें सिखाई गई है इसके अंदर कि जब आप ट्रांसग्रेस कर जाओ, क्योंकि शैतान तो टो में बैठा हुआ है आपको ट्रांसग्रेस कराने के, जब आप कर जाएं तो फिर आप तौबा करें. ठीक है. एंड देन अल्लाह ताला ने कहा फिर हमने उन्हें दुनिया में भेजा एंड हमने उनको क्लोथ किया फ्रॉम देयर नेकेडनेस. ठीक है. और अल्लाह ताला लेकिन आगे कहते हैं मगर जो बेहतरीन कपड़ा है, जो बेहतरीन लिबास है, वो लिबास क्या है? तकवे का लिबास है. ठीक है. और तकवे का लिबास एक ये सब जो है ये आयत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके लिए जो लेसन्स लेना जानते हैं, जो लेसन्स लेने की मतलब एबिलिटी रखते हैं, राइट? सो व्हाट इज द कनेक्शन ओवर हियर? द कनेक्शन इज दैट नंबर वन, शैतान इज गोइंग टू ट्राई टू डिसीव यू विद फॉल्स प्रॉमिसेस. ठीक है. एंड आप एक्चुअली में कर ये रहे होंगे कि आप अल्लाह की हुदूदों को क्रॉस कर रहे होंगे. ठीक है. बट आपको दिखा वो ये रहा होगा कि आप कुछ और कर रहे हैं, एज अल्लाह ताला के बारे में आपका गलत गुमान क्रिएट करके आपसे वो हुदूद क्रॉस करवाएगा. ठीक है. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गिविंग यू टू थिंग्स. इफ यू डू क्रॉस द हुदूद, डू तौबा. ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि तौबा करी, लिबास उनके हट गए, उसके बाद तौबा करी तो लिबास वापस आ गया. सो जो एक कनेक्शन ब्रेक हुआ या जो भी एक पनिशमेंट आई वो खत्म हो गई, राइट? बट इट वाज रिवर्स बिकॉज ऑफ तौबा. बट द एक्चुअल बेस्ट लिबास इज द लिबास ऑफ तकवा. ठीक है. इससे ये होगा, इट्स द प्रीएम्प्टिव, इट्स द प्रिकॉशन. एक क्योर है कि अगर आप गलती कर दें तो क्योर उसका ये है कि आपको बैक टू योर हेल्थ जाना है तो यू डू तौबा, राइट? एंड जो प्रिकॉशन है वो तकवा है, right? So that is what this is teaching us. Now, how do we develop the mindset of taqwa? And how do we develop the mindset that is able to see the deception of shaitan? सही है? तो उसके लिए let's have a look at this beautiful hadith. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam has told us, حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوة. Okay. हुफ़्फ़त means to be enveloped, right? तो एक लिफाफा जिस तरह envelop कर लेता है जो भी चीज उसके अंदर होती है, सराउंड कर लेना. तो जो जन्नत है, it is surrounded bil makariha. Makariha is basically hardships, anything that is hard on the nafs, ठीक है? जो आपको करना मुश्किल हो, that's makarihi. وحفت النار بالشهوة. Shahwa is basically your desires, ठीक है? So जो जहन्नुम है वो temptations और desires से enveloped है. So there's like double layer. एक layer जहन्नुम in itself and it is covered. So imagine it's like an envelope. And if the beautiful envelope with temptations and desire and you really want to grab to it कि ये आपकी सारी desires पूरी करेगी, सब आपको दुनिया में भी ये कह रहे हैं, इसी के पीछे जाओ, यही सबसे खूबसूरत है, यही अच्छी चीज है, यही ले लो. दो एनवेलप्स आपके, एक बिल्कुल ही पुराना मुश्किल अजीब सा, बिल्कुल ही टूटा फूटा सा, स्क्रैचेस सा, नॉट अ नाइस वन. एंड एक एक जो है वो बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा अट्रैक्टिव सा, बड़ा एवरीबडी इज ऑल्सो पुशिंग यू फॉर इट, एवरीबडी इज ऑल्सो इन द दुनिया रीचिंग फॉर इट. एक ऐसा एनवेलप है. And you basically choose the pretty one, the one with that appeals to you, that you desire. And what happens is when you open it, uske andar hellfire. On the other hand, this one that आपको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको कैरी करना, बट व्हेन यू ओपन इट उसके अंदर जन्नत. सो ये एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज द आइडिया इज दैट there is the illusion of beauty, there is the illusion that attracts you to दुनिया. ये illusion बार बार अल्लाह ताला ने बात की, डिसेप्शन है शैतान. दैट वो दुनिया को इस तरह से रैप करके हमें प्रेजेंट करता है जैसे कि दुनिया हमारे लिए अच्छी है. और इंटरेस्टिंग बात कुरान में ये भी है कि वो रैप उसको सिर्फ इस तरह नहीं करेगा कि आपको क्लियर पता चल रहा हो कि आप ट्रांसग्रेसर्स हैं. वो उसको ऐसे भी रैप करेगा कि आपको ये लगेगा कि आप जैसे अल्लाह ताला जो चाह रहे हैं वो ही कर रहे हैं. This is so interesting because, yeah, this is something that actually Allah would want. So you should go for it, right? So that is what, like, Allah Ta'ala ने जब मना कर दिया ट्री के पास नहीं जाओ, और वो फिर आके बता रहे हैं असल में अल्लाह ताला इसलिए मना करें क्योंकि अब अगर तुम ये ले लोगे तो फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ रह लोगे. So he basically convinced them that, you know, like, you should take it.
because he does want you to stay here forever, but maybe he has different plans, abhi nahi baad mein, or whatever, in a way to basically show them that this is what Allah wants from you. Okay? You should go for it. So Nasir is going to envelop it with desire and temptation, but he's also going to, उसका part एक ये भी हो सकता है कि आपको वो ये deception दे दे कि जैसे कि ये जो दुनिया है वो आप जो भी कर रहे हैं वो actually this is what Allah actually wants from you. ठीक है? So या आपको ये मिल जाएगा तो फिर this is what you're gonna get and this is what Allah wants for you, right? So this is the delusion of dunya. This is the deception of dunya. ठीक है? अब अंडरस्टैंड करते हैं द आइडिया ऑफ शहवा एंड द आइडिया ऑफ मकारिही. दोनों कनेक्टेड है नफ्स से. आपकी नफ्स के लिए जो चीजें अट्रैक्टिव है, ठीक है, वो चीजें आर द वंस दैट आर रिलेटेड टू द शहवा, एंड द थिंग्स दैट योर इज हार्ड ऑन योर नफ्स, दोज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द मकारिही, दैट दे आर द हार्डशिप्स. ठीक है? एंड दुनिया का comparison अगर आखिरत से किया जाए, so it only makes sense that आखिरत is the more worthy for our efforts, because the आखिरत is the one that is actual reward. and आपको खुद भी पता होता है जो आपको कोई चीज हासिल करनी होती है जो एक्चुअली आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, तो वो चीज आसानी से नहीं आपको मिल जाती. ठीक है? वो चीज मुश्किल से ही मिलती है, right? So we need to understand that this dunya is filled with temptations. It's filled with illusions, illusions of security, illusions. ये सारे illusions you will see are actually connected to अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया जब उन्होंने भेजा नीचे कि आपका provision जो है वो आपको मुद्दत जितनी है उस तक आपको provide कर दिया जाएगा, and आपकी dwelling everything is provided, and then you will be returned back, right? बट यहीं पे कहीं illusion होता है कि you are made to forget कि Allah subhanahu wa ta'ala has already promised you these things, because then shaitan promises you the very things and then he makes you run after the dunya to get those things. So you end up getting them, but वो already आपको promise थे. ठीक है? So and you get them by actually disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, right? Like the eternity actually अगर focus किया जाए तो actually में मलाइकीन से ज्यादा अल्लाह ताला ने फजीलत इंसान को दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मतलब कुरान इंसान पे नाज़िल फरमाया, एंड एवरीथिंग यू कैन सी इन द कुरान दैट अल्लाह चोज इंसान, राइट? मलाइका ने भी कहा कि आप हमें क्यों नहीं चूज कर रहे, आप इनको क्यों चूज कर रहे हैं, ये तो फितना और फसाद करेंगे. बट अल्लाह ताला ने कहा कि आई नो व्हाट यू डू नॉट नो, राइट? सो अल्लाह ताला एक्चुअली चोज देम ओवर द मलाइका. ठीक है? एंड हम ही तो हैं जो खालिदीन फीहा अबदा, राइट? बार बार कुरान पाक में यही आता है ना, मुसलमानों के लिए आता है ना, मोमिनों के लिए आता है, बिलीवर्स के लिए तो आता है. बनी आदम के लिए तो, जो मोमिन है जो मुसलमान है बनी आदम से, उन्हीं के लिए तो आता है कि वो जन्नत में फॉरएवर रहेंगे. खालिदीन देखें, अब जब भी आप कुरान में खालिदीना पढ़ें तो आपको याद आना चाहिए कि उसने एक्चुअली वादा उसी चीज का किया था जो एक्चुअली हमें मिलनी है, बट उसको हासिल करवाने के लिए अल्लाह ताला को डिसोबे करवा. एंड इवेंचुअली यू विल गेट दोज थिंग्स, बट क्या ही फायदा है जब आप उसको ऐसे आप हासिल कर रहे हैं कि आप अल्लाह को डिसोबे करके हासिल करें, ना कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए हासिल करें. तकवे के अंदर गॉड कॉन्शियसनेस में सब चीजें आ जाती हैं. तकवा मेक्स श्योर दैट यू डू नॉट disobey Allah. ठीक है? Taqwa reminds you that Allah is Allah, that He is the Ilah, He is Qudra over everything, because you're conscious of who Allah is. तो आपको जब समझ आता है कि अल्लाह है कौन, तो उनकी ग्रैंडोइस और उनकी पावर आपको जब समझ आता है, उनका नॉलेज, इनका इल्म जब आपको समझ आ जाता है, तो फिर आप अल्लाह ताला को डिसोबे करने से कतराते हैं. यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आपको वजह नहीं होती डिसोबे करने की. क्या आपको वजह से डिसोबे कोई करवाएगा? इस वजह से कि आपको रिस्क मिल जाएगा. तो जवाब सादा सा है कि वो तो पहले से ही अल्लाह ताला ने, अल्लाह राज़िक है, तो मैं अल्लाह को क्यों डिसोबे करूं रिस्क की खातिर. ठीक है? अगर औलाद के लिए किसी को वो डिसोबे करवाना है तो अल्लाह ताला खालिक है, वही तो बनाने वाली जात है, वही तो है जो युलजुल लैला फिल नहार व युलजुल नहार फिल लैल, युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, कि वो ही तो हैं जो मौत से हयात पैदा करते हैं, हयात से मौत, और
वही तो हैं जो खालिक है, right? He is the one who's created. He has the power over that. So when you start understanding Allah, when you start learning the names of Allah, you're able to actually understand La ilaha illallah. And जब आपको ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आता है तो फिर आप अल्लाह ताला की हुदूद को पार नहीं करते, फिर आप एक्चुअली तकवा इख्तियार करना शुरू हो जाते, and that becomes your arsenal, your weapon against the delusions of the dunya. Because delusion basically shows you कि तुम्हें ये मिलेगा अगर तुम ये करो, पर आपको पता होता है कि मेरे ये करने से मुझे ये नहीं मिलेगा, ये तो मेरा लिखा हुआ है, और एक्सक्यूज मी, ये तो आप कह रहे हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के कमांड को फॉलो नहीं करो, डिसोबे करने को कह रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं कर सकता, जो कि ऑलरेडी मुझे वो चीज मिलनी है बिकॉज अल्लाह ने बोला है वो देंगे, एंड साथ में मैं अल्लाह को डिसोबे करके उस चीज को हासिल कर लूं. सो यू नो लाइक illusions होते ही ऐसे, once you see it you're not able to unsee it. That is another very important thing कि हमें अपने आप को ट्रेन करना है तकवे के साथ. तकवा हासिल करने के लिए हमें कुरान को समझना पड़ेगा. हुदल्लिल मुत्तकीन, that is how the Quran starts. In Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says this. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Right? This is the hidayah for the muttaqeen. You need to study the Quran. You need to understand the Quran. You need to ask Allah to grant you hidayah of the Quran, to understand the guidance of the Quran so that you become muttaqi, that you develop the taqwa mindset. And when you develop the taqwa mindset, you can see the delusions, the illusions of the dunya. और एक दफा कोई illusion आपको दिख जाता है, फिर वो illusion नहीं होता, फिर you are कभी वो picture फिर आपके सामने आएगी, you won't be able to, you will see through it, right? That's how illusions work. So once you do see the illusion, it will never impact you because you have taqwa. And how will you see it? Through taqwa. And what is taqwa? It is being aware of Allah. Not only that Allah is watching you, but also who Allah is. For that, learn the 100 names of Allah. Understand what that means. Understand what La ilaha illallah means. A way you could do is खुद से भी रमजान में, बहुत टाइम नहीं आपको लगेगा अगर आप वक्त निकालें, अल्लाह सुब्हानो तआला के सारे नाम स्टडी करें और उनको इनपुट करते जाएं, इलाह हटाएं और नाम डाल दें. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला राज़िक इल्लल्लाह, और इसको अपने ब्रेन में इंग्रेन कर लें. ला राज़िक इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा रिस्क देने वाला कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा खालिक कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा रहमान कोई नहीं है. Just fill it, all the names of Allah. That is how you will start your journey on understanding who Allah is. And जब आपको अंदर तक समझ आ जाएगा ना अल्लाह है कौन, तो आपके लिए तकवा इख्तियार करना आसान हो जाएगा, right? Because taqwa is the adornment. It is the one that if you wear that, the shaitan will not be able to take it off you. That is the actual libas. Okay? Because I told you the cure is tawbah, but the precaution is taqwa. That is something to learn and understand. The next hadith even further qualifies the idea जो हमारे माइंड में ये हमें बना दिया जाता है कि दुनिया को हासिल करें, right? As if that's the be it and end all. But the reality is that the ad-dunya sijnul mu'mini or mu'min wa jannatul kafir. That dunya is like a prison for the mu'min and it's like a jannah for the kafir. This is so interesting because सबसे पहली बात ये है, दुनिया और मोमिन और काफिर की बात हुई, सो ईमान जिसके पास है जिसके पास नहीं है, दोनों की बात हुई है. But so they are opposites. But सिजन जन्नत का ऑपोजिट नहीं है. जन्नत का ऑपोजिट तो नार है, जहन्नम है. जहन्नम और जन्नत, right? So why are these words used? Because you need to understand that सिजन के साथ, prison के साथ freedom होना चाहिए. But the dunya, the paradise like dunya is not freedom. It does not give freedom to the disbeliever or the one who's not a mu'min. You should understand that mu'min के opposite में मुनाफिक भी आता है. And with the passing of the Prophet, we no longer can identify who is a munafiq and who isn't. And when you study about the munafiqs in the Quran, it could actually be you. This is a completely different debate. We'll talk about it if you want to later, if anyone wants to discuss this. But the idea is here that the opposite of mu'min finds the dunya jannah. But यहाँ पे प्रिजन और फ्रीडम की बात नहीं हुई है क्योंकि वो जन्नत एक्चुअल जन्नत नहीं है.
वो आपको इल्यूजन है जन्नत का कि आपकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, कंफर्ट है, हर तरह की आसानी और हर तरह की आसाइश है आपके पास, जो आप चाहते हैं आपको मिल जाता है. You feel you're like the most blessed person and you have the best things in the world. That's the idea of Jannah. But it's not actually the idea of freedom, because we studied this, that actual ghana is the ghana of the nafs, that you're free, your soul is free. Because the dunya ka jo wealth hai, that actually bounds you. Subah se sham tak it puts you in a grind, right? You're not free. You're not free. ना ही आप mentally free होते हैं और ना ही आपका वक्त free होता है. You are giving a much bigger thing in return of getting the Jannat-like dunya, right? And Sijn, on the other hand, because there are boundaries. A prison has boundaries. You have to follow a strict regiment. This is the time you're going to wake up. This is the time you're going to go to sleep. हर चीज एक strict regiment को follow कर रही होती है. And you have a boundary within which you have to stay. You cannot cross that boundary. So the dunya is like that. You have to stay within a boundary, and that is the boundary of Allah. Okay. And you have to follow the routine that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, the 5 times prayer every day, the zakat every year, the Ramzan, the Roza every year, right? So you have to follow, and the taqwa, the understanding of La ilaha illallah every second of your life. Okay, so the 5 pillars are distributed with har lamha, har din, har saal, again, har saal mein ek dafa, har saal mein ek pura mahina, and then puri zindagi mein ek dafa, that's Hajj, right? That's how it's distributed. But we forget about the har lamha part, the iman in Allah subhanahu wa ta'ala. That's a part of our pillars of Islam as well as our faith, articles of faith. Yeah. So that is what you need to remember. That the dunya is sijin, it's a prison for the moment, and jannah for the kafir. Yeah. Because the kafir focuses on comfort. The kafir focuses on the best and the most luxurious experience. The kafir wants immediate payout. तो उसकी जितनी सैलरी है, imagine how it would be if आपको 10 लाख सैलरी मिल रही है and वो पूरी अमाउंट जो है वो आपको अपने उसी महीने में खर्च करनी है, the kind of life you will have, versus the salary that you get 10 lakhs, which you can only spend 25,000 out of it because the rest is getting deposited. So imagine the kind of life, ये prison like life आपको feel होगी, because you have a strict budget and a strict regimen that you have to follow, and you have to remain within the boundaries of your budget and whatever. That's the idea, that the kafir just takes all what he gets and he just spends it on the dunya because he thinks that dunya hi ki ye to hai. All his efforts go into the dunya to make his dunya comfortable, to make it the best experience. लोगों को डराया ही इस चीज से जाता है कि आगे जाके मोहताज हो जाओगे, आगे जाके फ्यूचर सिक्योर नहीं करोगे, घर नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चों को पढ़ाओगे कैसे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे. डराया ही इस चीज से जाता है. किसी की अगर अच्छी लाइफस्टाइल होती है तो उसको उससे डराया जाता है कि ये जिंदगी नहीं अफोर्ड कर सकोगे अपने ओन पे अगर करोगे, अगर ऐसे ही करते रहे कि दुनिया के पीछे नहीं भाग रहे हो, दीन के ही पीछे लगे हुए हो, इससे क्या, इससे नहीं मिलेगा. कितने ही लोगों की ये स्टोरीज हैं जो एक्चुअली दे वांट टू परस्यू the deen, but they're not able to because they're made scared of what will happen in the future, that they will have the worst lifestyle, they will have a very poor lifestyle. But किसने कहा है कि बहुत बेस्ट लाइफस्टाइल आपका होगा. वो तो जन्नत तो काफिर के लिए है दुनिया. मैं ये नहीं कह रही you shouldn't, that's a completely different idea. I'm not saying that having good lifestyle वो भी अल्लाह की देन है, it's a blessing from Allah, but there is a difference in अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा देना, अपना दिन और रात उसको हासिल करने में लगा देना. So which is, you're doing something, वही idea. If Allah has destined a good life for you, you will get that good life. There are two ways. Either you transgress, like शैतान ने करवा दिया. डेस्टिन तो थे ना वो खालिदीना फीहा जन्नत में रहने के लिए, और वो तो मलाइका से भी ऊपर दर्जे पे थे. बट उसने, शैतान ने उनको क्या नाम है डिल्यूजन में डाला, और वही चीज जो उन्हें मिलनी थी उसको हासिल करने के लिए ट्रांसग्रेस करवा दिया. और दूसरी ऑप्शन में ये है कि वो तकवा इख्तियार कर लें आप इंसान, और आप तकवा इख्तियार कर लें तो आपको ट्रांसग्रेस नहीं करें, आपको मिलना तो जो है वो मिलेगा. But how, what path are you taking towards it? Are you taking the path that Allah Ta'ala has said in the Quran कि नहीं जाने दुनिया के पीछे, नहीं भागना है. You don't have to, because dunya is not worth running after, right?
So you take that path and you get that very same thing. Yeah, you take, because what you're supposed to get, you will get. ठीक है? And obviously, जब आप ऐसी चीज हासिल करते हैं जो आपने मेहनत से करी होती है, आपके दिमाग में कि मैंने 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाए इस घर को बनाने के लिए, तो जाके मैं खरीद सका हूँ ये घर एंड ऑल दैट, तो आप में मैं आ जाती है दैट यू डिड इट, right? But when you have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, and when you haven't lived a life that's actually running after material possessions, तो फिर ये होता है that you don't have that anymore. You instead, even if you get something, you are shukr guzar, because you are not associating the मैं. So ये सब इतना connected है, because it's literally one message of Allah. It's the same. It's all connected. तो जो आपको कुरान में बताया गया है कि ये नहीं करना है, और ये एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो शैतान को फॉलो करते हैं, आप यकीन से जाने वो एट्रीब्यूट्स अगर आप स्टडी करेंगे तो वो सारी एक ही तरफ डायरेक्ट कर रही होंगी, वो होंगी अल्लाह ताला को डिसोबे करने पे, और वो उसकी स्टेम हो रही होगी तकवा के बगैर होने की वजह से कि आप में तकवा नहीं, राइट? सो रिमेंबर, दिस दुनिया इज नॉट सपोज टू बी योर जन्नत, ठीक है? इट इज सपोज टू बी अ प्रिजन. सो दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर. ये दुनिया से ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि आपको बहुत आसानियां और बहुत अच्छी लाइफ होगी, बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, हर वक्त आपको सर्टेनिटी मिलेगी. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी. सही है? सो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. I end my lesson with this, and I hope that may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people who understand the Quran and who are able to learn about taqwa, and not just learn about it, but make it a part of our lives. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the understanding of who He is, so that it becomes easier for us to obey Him and follow His commands and be protected from our udubun mubin, our most shadid dushman, and our most shadid one who wants us to be astray and become nashukra of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillah. If anyone has any questions, if there are any points that you want to discuss, inshallah you can use the chat on the WhatsApp for that. I will see you in the next service.